Hello, my dear students. I welcome you all of you in your mathematics class. Today we are going to learn chapter 21 circles, triangles, and quadrilaterals. First, we do some discussion about triangles. Triangle. A triangle is a simple closed figure formed by joining three non-collinear points. That means ट्रायंगल एक क्लोज फिगर है जो नॉन कोलिनियर पॉइंट को ज्वाइन करके हमें मिलता है. नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स पॉइंट्स विच आर नॉट लाइज इन सिंगल line. And name of the triangle is given by three capital letters at the vertices and denoted by the symbol this. So in triangle ABC, three vertices are point A, point B and point C. Three sides are AB, BC and CA, and three angles are angle A, angle B, angle C, or another name of angle A is angle CAB, another name of angle B is angle ABC, and another name of angle C is angle BCA. Next, we discuss classification of triangles on the basis of sides. First, equilateral triangle. A triangle in which all three sides are equal to each other is called equilateral triangle. Means ऐसे ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल है उसको हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल. हियर इन ट्रायंगल PQR, PQ is equal to QR and QR is equal to RP. Means all the sides of triangle PQR are equal. So triangle PQR is an equilateral triangle. Second, isosceles triangle. A triangle in which two sides are equal to each other is called isosceles triangle. That means triangle में two side equal होती है तो हम उसको बोलते हैं isosceles triangle. In triangle MNP, MN and MP are equal. So triangle MNP is an isosceles triangle. Third, scalene triangle. A triangle in which none of the sides are equal to each other is called scalene triangle. That means ऐसे triangle जिसकी एक भी साइड इक्वल ना हो उसको हम बोलेंगे scalene triangle. In triangle ABC, AB is not equal to BC and BC is not equal to CA. Means in triangle ABC there is no equal sides. So triangle ABC is a scalene triangle. Next, classification of triangles on the basis of angles. First, acute angle triangle. A triangle in which all the three angles are acute is called acute angle triangles. That means ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल एक्यूट एंगल है तो उस ट्रायंगल को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल. इन ट्रायंगल PQR all the angles are acute angle. So triangle PQR is acute angle triangle. Next, right angle triangle. A triangle in which one of the three angles is a right angle is called right angle triangle. ट्राइंगल में अगर एक भी एंगल राइट एंगल है तो हम उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल. इन ट्राइंगल XYZ एंगल Y is right angle. So triangle XYZ is a right angle triangle. In right angle triangle, the side opposite to the right angle is called hypotenuse. That means right angle triangle में right angle के opposite side जो होती है उसको हम बोलते हैं hypotenuse. The lower arm of the right angle is called base. Lower arm PN को हम बोलेंगे base and the upright arm of the right angle is called altitude or height. तो यहाँ पे ये जो साइड है MN उसको हम बोलेंगे altitude और height. Third, obtuse angle triangle. A triangle in which one of the angle is more than 90 is called obtuse angle triangle. That means triangle में एक भी एंगल अगर 90 से ग्रेटर है तो हम उसको बोलेंगे acute angle triangle. In triangle ABC, we observe that measurement of angle B has 180 degree. So angle B is obtuse angle. So triangle ABC is obtuse angle triangle. Next,
Sum of the angles of a triangle is 180 degree. That means कोई भी ट्राइंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है. Next, remember, a triangle cannot have more than one right angle. Because अगर ट्राइंगल को 2 राइट एंगल है तो दोनों एंगल का सम हो जाएगा 180. बट यहाँ पे हमने देखा कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180. सो कंस्ट्रक्शन ऑफ सच ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल. सेकेंड, अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल. तो ट्राइंगल को दो या दो से ज़्यादा एक्यूट एंगल नहीं होते हैं. सेकेंड, अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल. दैट मीन्स ट्राइंगल को एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होते हैं. बिकॉज अगर ट्राइंगल को दो ऑब्ट्यूज एंगल है तो उसका सम 180 से ग्रेटर हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है. थर्ड, एटलीस्ट वन एंगल इन ट्राइंगल हैज़ टू बी मोर देन 60 एक्सेप्ट इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. दैट मीन्स इक्विलैटरल ट्राइंगल के अलावा कोई भी ट्राइंगल में एक एंगल 60 डिग्री से ग्रेटर होता है. बिकॉज अगर सारे एंगल 60 से लेस डिग्री के हैं तो ट्राइंगल के एंगल का सम 180 से लेस होगा, जो पॉसिबल नहीं है. Now we are going to start activity 2. Question number 1. In triangle ABC, name sides of triangle. So sides of triangle are AB, BC and CA. Next, vertices of the triangle. So vertices are A, B and C. Next, angles of the triangle. Angle BAC, ABC and ACB. Next, question number 2. Classify the given triangles according to their angles. First, in triangle ABC, we observe that angle B is obtuse angle. So, triangle ABC is obtuse angled triangle. Next, B in triangle PQR, angle P is right angle. So, this is a right angled triangle. Next, in triangle MPN, all the angles are acute angle. So, triangle MPN is acute angle triangle. Next, D in triangle XYZ, angle X is a right angle. So, triangle XYZ is a right angle triangle. Next, E in triangle ABC, angle B is obtuse angle. So, triangle ABC is obtuse angle triangle. In triangle ABC, all angles are acute angle. So, triangle ABC is acute angle triangle.
Question number 3. Classify the given triangles according to the length of their sides. A. We observe that in triangle ABC, all sides are equal. So, triangle ABC is equilateral triangle. Next, B. In triangle PQR, PQ and PR are equal. So triangle PQR is isosceles triangle. Next, C. In triangle MNP, all sides are different. So this is scalene triangle. Next, D. In triangle XYZ, XY and YZ are equal. That means in triangle XYZ, two sides are equal. So triangle XYZ is isosceles triangle. Next, E. In triangle ABC, all sides are different. So triangle ABC is scalene triangle. Next, F. In triangle XYZ, all sides are equal. So it is equilateral triangle. Next, question number 4. Check whether the following can be the angles of a triangle. A. 33 degree, 90 degree, 45 degree. First of all, we find sum of the three angles. And addition of these angles is 168 degree, which is less than 180 degree. So they cannot be angles of any triangle. Next, see 55 degree, 89 degree, 38 degree. Same, first of all find the sum of the three angles. This is equal to 182 degree, which is greater than 180 degree. Therefore, they cannot be angles of any triangle. Next, D 15 degree, 59 degree, 106 degree. Same, first of all we find the sum of the three angles.
15 degree plus 59 degree plus 106 degree, and addition of this is 170 degree, which is less than 180 degree. Therefore, they cannot be angles of any triangle. Now, remaining sums of question number 4 you can do in your homework. Next, question number 5. Find the missing angle in each triangle. A. In triangle ABC, angle A is equal to 90, angle B is equal to 40, and angle C we have to find. As we know that sum of the angle is 180 degree, so angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Angle A is 90 degree plus angle B is 40 degree and angle C हमें फाइंड करना है. So 90 plus 40 addition we get 130 degree plus angle C is equal to 180 degree. We shift 130 in right hand side, so we get angle C is equal to 180 minus 130. So angle C is equal to 50 degree. Next, C. In triangle XYZ, angle X is equal to 60, angle Y is equal to 60 and angle Z we have to find. As we know that sum of the angle is 180 degree, so angle X plus angle Y plus angle Z is equal to 180 degree. Here angle X is 60 degree, angle Y also 60 degree plus angle Z is equal to 180 degree. So 60 plus 60 we get 120 degree plus angle Z is equal to 180 degree. Now we shift 120 in right hand side, so we get angle Z is equal to 180 minus 120 and this is equal to 60 degree. Remaining sums of question number 5 you will do in your homework. Next, question number 6. In triangle ABC, angle A is equal to 72 degree and angle B is equal to 68 degree. Find angle C. As we know that sum of the angles of triangle is 180 degree, therefore angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Here angle A is 72 degree, angle B is 68 degree and angle C we have to find. So 8 plus 2 10, carry on 1, 1 plus 7 8, 8 plus 6 14, 140 degree plus angle C is equal to 180 degree. Therefore angle C is equal to 180 degree minus 140 degree and this is equal to 40 degree. So we get angle C is equal to 40 degree. Next, question number 7. The measure of two angles of a triangle are 95 degree and 72 degree. Find the third angle. तो यहाँ पे टू एंगल्स का मेजरमेंट गिवन है एंड थर्ड एंगल का मेजरमेंट हमें फाइंड करना है. सो दिस इज डू इन योर होमवर्क. Next, question number 8. One of the acute angle of a right angle triangle is 42 degree. Find the other acute angle. So here, one of the acute angle is 42 degree
and it is right angle triangle. So one of the angle is 90 degree. So third angle is equal to 180 minus sum of 90 and 42. So this is equal to 180 minus 132 degree, and we get answer means third angle is 48 degree. So the other acute angle is 48 degree. Next, question number 9. Two angles of a triangle are equal. If the measure of the third angle is 116 degree, find the measure of each of the following angles. That means triangle में टू एंगल्स इक्वल है एंड थर्ड एंगल 160 डिग्री का है, तो हमें इक्वल एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है. हियर टू एंगल्स of a triangle are equal, and we know that sum of three angles is equal to 180 degree. So 160 degree plus sum of two equal angles is equal to 180 minus 160 degree, and this is equal to 64 degree. Therefore each equal angle is equal to 64 degree upon 2 is equal to 32 degree. Next, question number 10. Fill in the blanks. A triangle has 3 vertices, 3 angles and 3 sides. ट्रायंगल को 3 वर्टेक्स, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स होती है. नेक्स्ट बी, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर 60 डिग्री. दैट मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल 60 डिग्री का होता है. नेक्स्ट सी, इफ टू साइड्स ऑफ एन ट्रायंगल आर इक्वल टू ईच अदर देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल. Next D, a triangle is called an acute angle triangle if all of its angles are acute. Next E, a triangle is called a right angle if one of its angle is right angle. Next, question number 11. State true or false. A triangle can have 2 right angle. It is false because अगर ट्रायंगल को 2 राइट एंगल है तो ट्रायंगल के एंगल का सम 180 से ग्रेटर हो जाएगा. नेक्स्ट बी, एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. इट इज ट्रू बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए एटलीस्ट 2 साइड इक्वल होनी चाहिए, बट इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल है. नेक्स्ट सी, अ
Scalene triangle has three sides of different length. It is also true. Scalene triangle में तीनों लेंथ डिफरेंट होती है. नेक्स्ट डी, अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल. ट्राइंगल को वन से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होते हैं. तो ये भी राइट है. इट इज़ ट्रू बिकॉज अगर ट्राइंगल को मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल है तो एंगल का सम 180 से ग्रेटर हो जाएगा. नेक्स्ट ई, अ ट्राइंगल कैन हैव ईच एंगल लेस देन 60. इट इज़ फॉल्स बिकॉज ट्राइंगल के सारे एंगल्स अगर 60 से लेस है तो उसका सम 180 से लेस होगा. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. In the given figure, find angle A plus angle B plus angle C plus angle D plus angle E plus angle F. Here we divide all the angles into group. So this is equal to angle A plus angle E plus angle C, and another group is angle D plus angle F plus angle B. Is sum of angles of triangle ABC is 180 degree and sum of triangle BDF is also 180 degree. So this is equal to 360 degree. Here we completed the activity 2 of chapter 21. Thank you one and all.